अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। ओके, तो कैमरा ऑन करो जल्दी से। ओके, तो कैमरा ऑन करो ना सभी। डिफरेंशियल ज्योमेट्री में तुम कहाँ पहुंचे हो सिलेबस में? सर अभी हम सेकंड यूनिट ऑलमोस्ट 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। 2 यूनिट पहला हुआ है, दूसरा पढ़ रहे हैं, वो ऑलमोस्ट 2-3 दिन के बाद खत्म हो जाएगा सेकंड भी। नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ वो मैं पढ़ाऊंगा कल से, क्योंकि शाहनवाज कोई और कोर्स पढ़ाएगा, तो इसलिए चलो मैं कल ही फिर क्लास में ही पूछूंगा तुम कहाँ पहुंचे हो उसमें एग्जैक्टली। ठीक है सर। कल से शुरू 10 बजे है क्लास उसकी। जी सर 10 बजे। और सर हमें डिपार्टमेंट ने लिंक दी है, उसमें अनलिमिटेड टाइम होता है। अच्छा, जी सर। मुझे पता ही नहीं था वो। चलो अब जैसा ही है, आज ऐसे ही चला लेते हैं, कल से देखेंगे। ठीक है। वो तो अच्छी बात है। मैंने देखा था कुछ व्हाट्सएप पे, मैंने सोचा चलो ये शायद, क्योंकि उन्होंने हमें नहीं वो इन्फॉर्म किया अलग से, मैंने सोचा कोई और होगा। चलो शुरू करते हैं हम। तो हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम एडजॉइंट की। So if you have two Hilbert spaces, okay, let me share the screen. If you have two Hilbert spaces H1 and H2, so we can talk about bounded linear operators from H1 to H2. And these are all mappings, all operators T from H1 to H2, such that T is linear. And of course, as usual, norm of T of X is less than equal to K times norm of X for some K positive. And this is positive, this is true for all X belonging to H1. So we can talk about bounded linear operators. And of course, जब मैं कह रहा हूँ Hilbert space, तो उसका मतलब है ये जो norm होगा H, norm जो होगा, norm of X जो होगा वो होगा square root of the inner product XX. Means it would be derived from dot n inner product. Then I can also talk about this thing BH. BH का मतलब होता है T is a map from H to H, and within this from the Hilbert space to itself. I can talk about these bounded linear operators. Definition वही है, लेकिन ये है कि यहाँ पर सिर्फ ये है कि हमने लिया है H1 और H2 को सेम और उसका नाम रखा है H. So ये था bounded linear operators. तो ये जो है तो हमने लास्ट टाइम देखा for any P belonging to BHY, BH1, H2 means a bounded linear operator from H1 to H2. There exists a map T star from H2 to H1, जिसको हमने कहा T star is the adjoint of T. Adjoint of T. Such that वो रिलेशनशिप है जो इसमें T और T star में, वो ये था. Basically, it is the same thing as conjugate, but since we can identify the dual with, in the case of Hilbert spaces by a representation, by a Rees representation theorem, we can identify the dual with the Hilbert space. So we get this form of the relationship between T and T star. That was Tx inner product, T of X inner product of Y is equal to X T star of Y for all X belonging to
H1 and y belonging to H2. So this is the definition or equivalent characterization. We call it characterization. This is the defining property of the adjoint, and this is an important property. Okay, अब हम देखेंगे adjoint की कुछ properties हम करेंगे. पहला तो ये है कि D star जो है वो एक bounded linear operator है. तो as a theorem हम उसको करेंगे कि ये D star भी bounded linear operator है. So given T belonging to the collection to the vector space, the normal linear space of bounded linear operators from H1 to H2, then T star, which is a map from H2 to H1, the adjoint of T, is a bounded linear operator. The adjoint of T is a bounded linear operator. Okay, such that एक दो उसकी important properties ये है, वो ये है A T double adjoint है, T adjoint का adjoint is T itself, and P norm of T is equal to norm of T adjoint. The norm same है, और अगर हम दो बार adjoint निकाले, adjoint का adjoint निकाले, we get T back. So let's do the proof. पहले दिखाएंगे it's a bounded linear operator. So वो next page पे करते हैं. Proof ये है, linear तो obvious है. Now we know that, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ. जो किसकी defining property है, we know that Tx, यूजुअली हम फिर इसका वो पैरेंथेसिस नहीं लगाते, मतलब होता है, मतलब जब हम अब बहुत सारे ब्रैकेट्स आ जाते हैं ना, ऐसे जब हो तो हम इसको सीधे लिख देते हैं ऐसे Txy, मतलब होता है T applied to x, but मतलब to avoid writing too many parentheses and brackets and all that. तो अब मैं वही करूँगा. We know that Txy is equal to x. This is a defining property of adjoint. Now this is true for all x belonging to H1 and y belonging to H2. If this is the defining property, then x T star of y plus z must be the same thing as T of x comma y plus z, right? Using this property, now this must be true because if for all y comma z belonging to H2 and x belonging to H1, because अगर y plus z H2 में है तो उनका sum भी H2 में है, तो ये property लागू होती है. Now properties of the inner products would tell us that this should be equal to Tx comma y plus Tx comma z. Again, using the property, defining property of the adjoint, it is the same as x T star applied to y plus x T star applied to z. Now, but that then can be written as x T star y by the properties of the inner product T star z. Again, by the properties of the inner product, it would imply, जब मैं इसको left hand side ले जाऊंगा सारा, I can write it as x T star applied to y plus z minus T star y plus T star of z inner product. This should be equal to 0 for all x belonging to H1 and yz belonging to H2. यानी ये हर एक वेक्टर के साथ, ये जो वेक्टर है ये हर एक x के साथ ऑर्थोगोनल है, और हर एक x के साथ एक ही वेक्टर ऑर्थोगोनल है जो 0 है.
So this would imply that t star y plus z minus t star of y plus t star of z, this can be a zero vector or कुछ नहीं हो सकता, which would imply that t star of y plus z then must be equal to t star of y plus t star of z. ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी इसी तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी अगर मैं लूंगा x t star of alpha y, by the definition of the adjoint should be tx comma alpha y for all x belonging to h1 and y belonging to h2 and alpha belonging to the scalar field. By this, इससे पहले जो हमने कहा हम बिल्कुल ही वैसे ही लिखेंगे. Now this can be written as alpha bar tx comma y. By the property of the inner product, this would be alpha bar x t star of y. This is the defining property of the adjoint. But that then can be written as x alpha t star of y. By this is true for all x belonging to h1 and y belonging to h2 and alpha belonging to the scalar field. So that would imply x comma t star alpha y minus alpha t star of y is equal to 0. Now this is true for all x belonging to h4 and y belonging to h2, alpha belonging to the scalar field. और फिर से अगर ये वेक्टर हर एक वेक्टर के साथ ऑर्थोगोनल है, सो एक ही चीज हो सकती है, ये 0 है, t star of alpha y should be equal to alpha t star of y for all y belonging to h2 and alpha belonging to k, which implies that जो पहला और इसको जोड़ के यहाँ लिख सकता हूँ hence t is linear. तो लीनियर तो हो गया. अब दिखाएंगे ये बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर है, ये कंटीन्यूअस भी है. सो लेट्स डू दैट. I can write इस तरह से. Now norm of t star of y का square by definition is equal to t star y comma t star y. Okay, but by the defining property of this adjoint, this is the same thing as t of t star of y comma y, right? Of course, चूंकि ये नॉन नेगेटिव है तो अगर मैं इसमें मॉड लगाता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता. Okay, now using the property of the Cauchy-Schwarz inequality, this should be less than equal to norm of t star of y into norm of y. This is Cauchy-Schwarz inequality. But this is a boundary linear operator t. This is less than equal to norm of t into norm of t star of y into norm of y. So you basically have, that is, चूंकि square है, norm of t star of y into norm of t star of y is less than equal to norm of t into norm of t star of y into norm of y, right? So what? तो ये एक कैंसिल हो जाएगा इसके साथ. This would imply that norm of t star of y is less than equal to norm of t into norm of y. This is true for all y belonging to h2. So मिल गया हमें continuity, है ना? We are seeing that t star of y is less than equal to some finite number, positive number, into norm of y for all y belonging to h2. So this implies that t star is bounded or is bounded. Linear तो हमने कर लिया. Hence दोनों को मिला के
T star belongs to the boundary linear operators from H2 to H1. And अगर T है a boundary linear operator from H1 to H2, then T star is a boundary linear operator from H2 to H1, where H1 H2 are Hilbert space. Furthermore, इससे हमें ये भी मिलता है कि norm of T star should be less than equal to norm of T, because by definition norm of this operator is the infimum of these operators here. Let's call it star या 1 देते हैं इसका नाम स्टार कहते हैं. ये आवाज कैसी आ रही है? ओके, तो ये तो हो गया बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर. अब इसका वो प्रॉपर्टी हम करेंगे. नाउ again using the defining property of this adjoint, that is x t star of y, पहले तो मैं इसको conjugate लगाऊंगा, मतलब इसको flip करूंगा, and it should be t star of y x. This is just the property of the inner product, and then I would use the defining property of the adjoint. Now I've defined that t star from h2 to h1. देखो, if t from h1 to h2 is a boundary linear operator, I have showed that t2 star is a boundary linear operator from h2 to h1. लेकिन उसका ये भी मतलब है then t double star is a boundary linear operator from h1 to h2, स्टार का स्टार, क्योंकि ये तो फिर एक ही हुआ. अगर ये भी बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर है तो इसके साथ भी हम प्रोसेस करके, ये शोर वहां कुछ हो रहा है, इसको बंद करो. तो हम इसको भी एडजॉइंट का एडजॉइंट ले सकते हैं और यही प्रोसेस लगा के एक और बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर खड़ा कर सकते हैं, दैट इज टी डबल स्टार. तो once I have done that, so then as per the property of the adjoint, I should have, this should be equal to y t double star of x bar. But flipping it back, I would get t double star of x is, this is true for all x belonging to h1 and y belonging to h2. So that would imply, what does that imply? That implies okay, लेकिन इसको मैं लिख सकता हूँ xty, but it implies that txy in inner product is equal to t double star of y comma y, oh sorry, x, for all x belonging to h1 and y belonging to h2. Bring the property of the inner product और इसको यहाँ ले जाएंगे left hand side पे. I will get tx minus t double star of x comma y is equal to 0 for all x belonging to h1 and y belonging to h2. अब क्योंकि हर एक वेक्टर के साथ इसका ऑर्थोगोनैलिटी है, so then this can be only 0 vector. So I should have tx is equal to t double star of x for all x belonging to h1. अब उसी का मतलब है कि t and t double star are the same operators, but they are equal. Okay, and also norm of t double star should be the same as norm of t, क्योंकि ये same operators. But norm of t, as we already have done, is less than equal to, oh sorry, हाँ ठीक है. Also by previous part, and यहाँ लिख लो, also by previous part हमने क्या किया? हमने किया था norm of t star is less than equal to norm of t. तो इस हिसाब से मिलेगा मुझे norm of t is equal to norm of t double star should be less than equal to norm of t star. एक स्टार कम कर दिया because I have done this previous part से ये प्रूव हो गया. तो अगर मैं इसको 2 मान लूं तो combining it with 1, t star is less than equal to norm of t, मतलब norm of t star is less than equal to norm of t, and norm of t is less than equal to norm of t star. हमारी वो तीसरी जो है एक remaining property है इस थ्योरम, या remaining चीज है इस थ्योरम की, जो वो भी प्रूव हो गई.
Hence, by first and second, norm of t should be the same as norm of t star. Okay, so far हम अच्छी जगह पहुंच गया. So now we can talk about, look, think about this. Now let this be the collection of all bounded linear operators between H1 and H2, and this be another right collection of this vector space or normal linear space or Hilbert space for that matter. No, normal linear space, not Hilbert space. But okay, so of bounded linear operators from H2 to H1. So we are saying that there is a one-to-one correspondence. So if there is a T here, there must be a T star here, and this correspondence preserves norm. A norm of T is equal to norm of T star. Furthermore, so T is the same as T double star. So here अभी तक हमने prove किया. But now we would focus on BH, यानी all the bounded linear operators. यहाँ पर इसकी कुछ और properties हैं. ये जो adjoint है इसको हम सोच सकते हैं as an operation, यानी that preserves certain properties. यानी अगर मैं यहाँ पे अब लेता हूँ T1 और फिर लेता हूँ T2, तो उनको हम ऐड कर सकते हैं with another T. तो हम ये दिखा सकते हैं अगर T1 के corresponding T1 star है, T2 के corresponding T2 star है भी इस स्पेस में, तो it would preserve the sum, यानी ये वेक्टर जाएगा T1 star plus T2 star. In other words, T1 plus T2 star is the same as T1 star plus T2 star. और भी कुछ ऐसी properties जो कि easy है prove करना. But let me write down this as a theorem. The adjoint operation means getting a T star from T, T going to T star, ये जो operation है from BH1, H2 to bounded linear operators from H2 to H1 has the following properties. पहला, simple सी बात, it's easy to prove. T1 plus T2 star is the same as जो मैंने बोला था T1 star plus T2 star. Second property, alpha T star, नहीं मैंने गलत लिखा. अगर मैं स्केलर मल्टीपल करता हूँ इस वेक्टर को, फिर लेता हूँ मैं उसका adjoint, it is the same thing as alpha conjugate into T star. Property third, composition, यानी T1 T2 का composition का star is equal to T2 star composition T1 star. लेकिन यहाँ composition operation है, ठीक है? Or in this case, for this to be meaningful, H1 is equal to H2 in this case. डोमेन और कोडोमेन सेम होनी चाहिए, तभी हम कंपोज कर सकते हैं और इन प्रॉपर्टीज की बात कर सकते हैं. चौथा, प्रॉपर्टी नहीं, ये तीन है, राइट. लेट्स प्रूव इट वन बाय वन. पहला, इट्स वेरी इजी, द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे. I would see what happens to this. This should be the same thing as, by the defining property of this adjoint, should be T1 plus T2 applied to X, comma Y. Now, using the pointwise operations inside the bounded linear operators from H1 to H2, this should be the same thing as T1X plus T2 of X, comma Y, which then can be written as, of course, by the properties of the inner product as Txy
T2 of x comma y, which by the defining property of the adjoint should be y. Oh, मैं क्या लिख रहा हूँ गलत? Should be x T1 star of y, and this should be x T1 star of y plus x T2 star of y. So then I can use the property of the inner products to write x comma T1 star of y plus T2 star of y. फिर सारा कुछ हम transpose कर देंगे to the left hand side and use the property of the inner product because x is same. So you will get T1 plus T2 star y minus T1 star of y plus T2 star of y is equal to 0 for all x belonging to h1 and y belonging to h2. अब अगर सभी वेक्टर्स के साथ इस वेक्टर का जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 है, it means it has to be a 0 vector. And it would imply that T1 plus T2 star applied to y should be the same thing as T1 star of y plus T2 star of y for all y belonging to h2, which would imply by the pointwise operations inside Vh2m, Vh2 h1, that T1 plus T2 star applied to y is the same thing as T1 star plus T2 star applied to y, all y belonging to h. It means that T1 plus T2 the whole star is equal to T1 star plus T2 star as well. They are the same operators. Okay. और बाकी तुम खुद करोगे ना, सेकंड एंड थर्ड तुम खुद करोगे. It's because they are too simple. ऐसे ही करना है. Nothing much. Next we come to a theorem. हाँ, तो इस तरह से हम सोच सकते हैं. This bounded linear operation जो है, bounded linear operators from h1 to h2, और इनके दरमियान एक कनेक्शन है जो स्ट्रक्चर को प्रिजर्व कर रहा है काफी हद तक, और एटलीस्ट प्रेडिक्टेबल है. At least we know exactly what will happen, although it does not preserve everything. Because why? क्योंकि अगर मैं f को लेता हूँ एक मैप जो t को बनाता है t star, then जो मैंने अभी तक प्रूव किया f of t1 plus t2 जो है, जो कि होगा t1 plus t2 का स्टार is equal to t1 star plus t2 star, which is equal to f1 of f of t1 plus f of t2. यानी इस सम को प्रिजर्व करता है. यानी जो मैप है, जो ऑपरेटर या जो प्रोसेस है टेकिंग द कॉन्जुगेट from the bounded linear operators from h1 h2 to bounded linear operators from h2 h1, right? So if this is the map that sends t to t star to service norm, यानी इसका नाम है f2, then norm of ft जो है वो है norm of t star, और हमें पता है that's equal to norm of t. ये norm को प्रिजर्व करता है, ये एडिशन को भी प्रिजर्व करता है, लेकिन एक ही चीज है कि अल्फा ऑफ t जो है that is equal to alpha t star, जैसा कि हमने अभी किया, that's alpha bar किया नहीं, हम असाइनमेंट रखी. So ये स्केलर जब बाहर आता है तो मैंने जो है alpha t है वो जाता है फिर alpha bar t star में, right? So lot of things are, or of course composition. If I take h1 equal to h2, in that case this would become BH, bounded linear operators from H to H, या bounded linear operators on H. तो in that case ये सब कुछ होगा. Furthermore, I can talk of this composition. यानी T1, T2 जो है वो उसको अगर मैं मैप करता हूँ वो जाएगा T2 star composition T1 star.
But in that case, that's what we will focus on this BH now. And we will be thinking in terms of bounded linear operators on a Hilbert space. And if from a Hilbert space to itself. तो वहां पे conjugation अगर मैं BH लूं, अब सारा कुछ BH में ही है ना? Because ये जो अगर यहाँ पे T है तो T स्टार भी इसी में रहता है ना? Right? Because यहाँ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स में H to H हो जाएगा और यहाँ पर भी तो वही हो जाएगा जिसको हम कहते हैं simply B of H, bounded linear operators on H. So they would become the domain and codomain of this thing would become the same. So in that case, अब मैं सोच सकता हूँ within BH क्या हो रहा है ना? तो T को मैं T star बना सकता हूँ via that process जो हमने किया using the Rees representation theorem. Then I can do many things. जैसे मैं T को T star का double star ले सकता हूँ, वो भी इसी में lie करेगा और वो फिर same होगा. मतलब ये जो BH है, it has got a lot of properties, pretty much all of them except the commutative property, जो कि है set of complex numbers. मतलब ये जो T goes to T star here is the same as Z going to Z bar inside the set of complex numbers. क्योंकि वहां पर भी जैसे यहाँ पे length of T star is equal to length of T, similarly modulus of Z is the same as modulus of Z bar. इसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे T double star is equal to T, इसी तरह से double bar अगर मैं लगाऊं Z double bar, it would be the same as Z. So there are many मतलब similarities between the set of complex numbers and this BH, the bounded linear operators on a Hilbert space. Except I think एक जगह जो है this need not commute, यानी complex numbers में होता है Z1, Z2 is equal to Z2, Z1. यहाँ पे ये जरूरी नहीं वो ऑपरेटर्स में कि वो commute करें. T1 composition T2 need not be equal to T2 composition T1, जो कि इसी में होंगे. So now our focus would be on this BH, bounded linear operators on a Hilbert space. और हम इन ऑपरेटर्स के बारे में कुछ नेक्स्ट जो हमारा फेज होगा इस यूनिट का, मतलब इसी पे हम फोकस्ड रहेंगे. सो पहला एक छोटा सा थ्योरम हम करेंगे इससे रिलेटेड, वो ये कि if T is a bounded linear operator on a Hilbert space H, where H is a complex inner product space then T is the zero operator if and only if the inner product of Tx with X is equal to 0 for all X belonging to H. अब इसमें ये है कि one side तो obvious है कि अगर T 0 है identically तो Tx 0 होगा for all X और 0 के साथ X का inner product भी 0 होगा. So proof 1 में तो easy है, लेकिन दूसरे में हमें actually prove करना है कि अगर Txx is 0 for all X belonging to H, then T must be the 0 operator. So this need not be true in suppose if H is a real inner product space, अगर उसका underlying field जो है वो real numbers है rather than complex numbers. But nevertheless, let's do it. Now if T is identically 0, यानी अगर T 0 है, it's obvious that उसका मतलब ये है कि T of X जो है वो है 0 for all X belonging to H. So that would imply that Tx comma X should be equal to 0x, but that's equal to 0 for all X belonging to H. तो अगर T 0 है तो one side तो obvious है कि Txx जो है ये 0. The other side, now conversely, suppose that ये Tx
मैं कभी कभी मुझे आदत है, कभी मैं लिखता हूँ, चलो अब मैं आदत बना लेता हूँ, टी एक्स एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब ना ये पैरेंथेसिस में लगा, जैसे मैंने यहाँ लगाया, यहाँ कहीं पे लगाता हूँ, कहीं पे नहीं लगाता, बट यू अंडरस्टैंड, मैंने बता दिया था कि दोनों ही नोटेशन यूज होती है बुक्स में। तो हमें दिखाना है टी इज आइडेंटिकली 0। अगर ऐसा है, देन आई कैन राइट इट लाइक दिस। तो देन फॉर ऑल एक्स वाई, चलो यहाँ लिख देता हूँ, then for all x y belonging to H and alpha beta belonging to the set of complex numbers, because I'm talking of a complex inner product space, I should have 0 is equal to t of alpha x plus iota b times y, comma alpha x plus iota b y, क्योंकि सभी x के लिए है तो उनकी जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये भी h के अंदर ही है, तो हमने यही वाली प्रॉपर्टी यूज की, टेकिंग फॉर x टू बी अल्फा x प्लस आयोटा बीटा y। और क्योंकि t लीनियर है तो हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दिस वुड बी, 4 चीजें बननी चाहिए लेकिन कुछ कैंसिल होंगी शायद। नेवरदलेस लेट्स डू इट। तो दिस वुड बी t of alpha t of x plus iota beta into t of y, comma alpha x plus iota beta y. Now left hand side is 0, तो मैंने linearity use की. Now using the property expanding this inner product, we can write it as alpha into tx. मैं साथ में थोड़ा कर रहा हूँ, alpha x plus iota beta y plus iota beta into t of y into alpha x plus iota beta y. Now applying the inner product again, should be alpha tx comma alpha x plus tx comma iota beta y, then plus iota beta into ty comma alpha x plus ty comma iota beta y. That can be written as alpha, देखो स्केलर बाहर आ जाएगा, it would be alpha bar क्योंकि दूसरे वेरिएबल से आ रहा है, तो it would be txx प्लस ऑफ कोर्स यहाँ आना चाहिए iota beta bar into tx comma y. ऑफ कोर्स यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं, आई विश आई हैड, लेकिन मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे ना, मतलब इस वाला जो एक्सपेंशन है बी iota beta bracket open, so it should be alpha bar into ty comma x plus iota beta bar into ty y. लेकिन हमें पता है अगर txx मैच होता है तो ये 0 है, यानी ये टर्म इसकी 0 होगी बिकॉज यहाँ ty है, और ये टर्म इसकी 0 होगी क्योंकि यहाँ txx है। ठीक है, तो अब ये लेस देन 1 मिनट रहा है तो इसलिए मैं इसको बंद करता हूँ और तुम फिर से ज्वाइन करो।